आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी एक ऐसे लड़की की जिसने एक स्टेट के 3 ब्यूटीफुल शहर ट्रैवल किए, वो भी अकेले, बिना लैंग्वेज के, बिना किसी प्लान के और बिना कोई टिकट्स बुक किए। कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपनी दोस्त की बात नहीं मानी, जो कि केरला से था और जिसने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि केरला आना है तो सिर्फ ट्रेन से आना। इवेंचुअली मेरी फ़्लाइट कैंसिल हुई और मुझे ट्रेन से ही आना पड़ा। और ये व्यू देखने के बाद मैं यही कहूँगी कि दोस्तों की बात कभी नहीं टालनी चाहिए। फोर्ट कोची एक्चुअली एक आइलैंड है और मुझे ये फोर्ट लग रहा था। यहाँ पहुँचते ही मैंने थोड़ा सा आराम किया एंड नेक्स्ट डे आई वॉज रेडी फॉर सम एडवेंचर बिकॉज हमारे पास सिर्फ 24 आवर्स थे कोची में। आई बुक दिस ब्यूटिफुल गोस्ट टॉप्स हॉस्टल जो मुझे सिर्फ 350 रुपीज़ में मिला। कैन यू बिलीव इट? एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट व्हाट आई एम गोना टेल यू इज़ एक्चुअली $1 बिलियन नॉलेज। मैंने एक पूरा दिन कोची में सिर्फ 500 रुपये में तय किया। कैसे? और चलो देखते हैं। And my first destination was a ferry. Yes, a ferry to Ernakulam which costed me ₹6. Yes, you heard it right. I think they influenced by me. They say they not fucking with me, alright. When shawty looking at me, she want me to slide for the flame. She want me to show her some things. But right now focus on me doing. आइलैंड से सिटी आने का रीज़न एक्चुअली था एक वेब सीरीज़ लिटिल थिंग्स का एक काफ़ी सुंदर सीन यहाँ पे शॉट किया गया था। मरीन ड्राइव इज़ एक्चुअली क्वाइट फेमस फॉर सनराइज एंड सनसेट्स एंड जो वॉकेबल डिस्टेंस है फेरी से। एंड आई रिटर्न बैक टू आइलैंड एंड इट वॉज टाइम टू रेंट अ बाइसिकल फॉर ₹60। इस वक्त आप शौक होना बंद ही कर दीजिए। फोर्ट कोची एक्चुअली 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस पे पूरा कवर हो जाता है एंड दीज आर द प्लेसेस दैट यू कैन कवर इन एक्चुअली 1 or 2 hours। और जैसे कि मैंने कहा कि दोस्तों की बात नहीं टालनी चाहिए, सो ऑन द रिकमेंडेशन आई वेंट टू काशी आर्ट कैफ़े एंड आई मस्ट से दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट कैफ़ेज आई हैव एवर विजिटेड इन माई एंटायर लाइफ, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरा लव ऑफ द लाइफ मिला विच वॉज दिस चॉकलेट केक। प्रिंसेस स्ट्रीट भी काफ़ी फेमस है फॉर कैफ़ेज, शॉपिंग एंड गिव्स यू अ वेरी फ्रेंची वाइब। आफ्टर दैट इट वॉज टाइम टू वॉच सम कथकली, बट सैडली उस दिन शो नहीं था। So I went on to an even better plan, which was Chinese fishing nets, for which Kochi is actually famous for. Gotta watch step on a tightrope. I never fall off this light work. Lord knows it's God's way. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ना, ये पहाड़ों वाली डेस्टिनेशन थी और मुझे यहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट बिकॉज पीपल इंसिस्टेड एंड हाइप्ड इट एंड आई एंडेड अप गोइंग हियर। दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस फ्रॉम ऑल द 4 केरला ट्रिप्स दैट आई डिड। एंड एज यूजुअल मैंने कोची से मुन्नार तक की बस पकड़ी विच कॉस्टेड मी ₹146। After staying in 20+ hostels, I felt that this hostel was not only one of the most beautiful hostels I've ever seen, but also the most expensive one. Big girl with big dreams and big trips. Talk is cheap, but please dare me to run up. I'ma put my money where my mouth is. Talk a good game, I'm an alphabet. So the same night in the hostel I got to realize that 90% of the crowd was on vacation और सब ने सारी टूरिस्ट जगह ऑलरेडी कवर कर ली थी। And then I came to think of इतने सालों की सोलो ट्रैवल वाली एक्सपीरियंस कब काम आएगी। Next day I rented a scooty for ₹500 and I had the time of my life. I be in my own space of mind, making boss moves in my own time, and I ride my own ride. Find me all alone, I'm on
स्कूटी स्टार्ट होने में दिक्कत हो रही थी ना, आई वाज लाइक व्हाट इफ अगर स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई तो, एंड ट्रस्ट मी यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है. हे गाइस, वेलकम टू वट्टाडवा एंड दिस इज़ मी आउट ऑफ नोवेयर. मैं वट्टाडवा में नहीं हूँ, मैं वट्टाडवा से 1 किलोमीटर आगे हूँ और आई काइंड ऑफ स्टॉप्ड हियर बिकॉज मुझे कुछ रील्स शूट करने थे एंड द प्लेस वाज प्रिटी काम एंड नाइस and I think I can hear a waterfall as well. I don't know if it's a waterfall or not, but this is basically a national wildlife sanctuary and you need permissions to get in here. तो जब हम स्टार्ट में यहाँ अंदर आए थे तो परमिशन के साथ आए थे and yeah, I mean the place is pretty calm and beautiful. अन्ना वट्टाडवा 10 same route, straight route. Thank you, Anna. And that is how I travelled, asking for directions without any network to our next destination, that was Top Station, जहाँ की फीस ₹20 थी. What to do when you visit Top Station? Try the homemade chocolate that is made in Munnar. And watch the view. Had to take a couple hits, a couple stones, but targets I don't ever miss. They wanna know. Chocolate is definitely better. So we are currently out of nowhere eating chocolates and kachi curry and trying to get good pictures. But sun जो है वो धीरे धीरे जा रहा है और बारिश के माहौल हो रहे हैं और अभी सिर्फ 12 ही बज रहे हैं. So let's hope I get good pictures here. एंड हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी इको पॉइंट, जो कि सबसे ज़्यादा सीनिक थी. प्लीज़ माइंड कि ये जो मैं आपको किलोमीटर्स बता रही हूँ ये वट्टाडवा से होते हुए मुन्नार तक के हैं, मतलब एक ही रूट पे पड़ते हैं, तो आप ये सब एक ही साथ कवर कर सकते हो. I didn't opt for the different Kundalam. The dam that we went starts with a K. That boating because I wanted to do it here, and as you can see, it's really fancy. And I don't know if we are on time or not because while going I saw this and I really wanted to do it here. It's Madupetty dam, so it's really pretty. And let's see how. A few moments later. Really sad day for me, because I stopped around 2 stops like for paddle boating as we saw in Little Things but I forgot that in Little Things Kavya had Dhruv and I have no one, so sadly paddle boating was quite cheap. It was just 150 rupees per person, but I had no partner. Well, after the boating disaster it was time for our next location, but Cinderella को देर हो रही थी घर जाने में. Okay guys, right behind me is Madupetty tea factory. You can also visit this by paying a fare of 150 to 300 rupees for the entire factory tour. Right now the मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा है and that's the reason I'm rushing back home. And also scooty का time हो चुका है and I need to return the scooty back. तो आप make sure if you come here you visit this tea factory and यहाँ की चाय ज़रूर try करें. And after having 2 full plates of thali which costed me 100 rupees each, it was time for me to head back to hostel. And this was not it for Munnar. Munnar actually काफ़ी बड़ा है and here's how you can cover it. Talking about Munnar, मैंने एक side of Munnar पूरी तरह से complete किया जिसको कहते हैं Madupetty side. There are 4 sides in Munnar: Madupetty, Kochi and 2 more which I am actually right now editing and putting here and I'm also listing down the places in the next slide. Okay, so these are the 4 places that you can actually visit in Munnar और कवर. मुन्नार को आइडियली पूरा कवर करने के लिए आपको 4 दिन काफ़ी होंगे और 3 दिन भी काफ़ी होंगे, बट 4 दिन भी काफ़ी हैं बिकॉज देर आर हाफ ऑफ द थिंग्स दैट मैं शायद कोची में कर चुकी हूँ, हाफ ऑफ द थिंग्स जो मैं एलपी में करने वाली हूँ. आई स्किप दोज एक्टिविटीज़ हियर एंड यू नो आप अगर मुन्नार घूम रहे हो तो एक पॉइंट के बाद आपको खुद लगेगा कि इट्स द सेम टी प्लांटेशन, इट्स द सेम लेक्स, इट्स द सेम सीनरी, इट्स द सेम व्यू, जस्ट द पॉइंट्स आर डिफरेंट. सो
इफ़ यू वांट आप एक या 2 जगह मैक्सिमम विजिट कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट यू नो it's all the same. One thing I wanted to say, after spending an entire day in Munnar, or 3 days in Kerala, is that one thing that my friends say, or even I had this misconception, was that people in south are not really that warm, because I've been so used to the warmth in north, especially in Himachal. It was actually really logical for me to set my expectations here, but pura ulta hua. People here are like so warm and so helping. I mean, बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग है एंड बहुत ही स्वीट है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट सम ऑफ द वर्ड्स इवन दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई स्पीक. मैंने एक बार भी ऐसा फील नहीं किया दैट आई एम इन अ area or a place where language is a barrier, because everybody helped me out, everybody helped me with the directions, where to go, where not to go. They sat, even if and they were not able to understand my language and I was not able to understand their language, they sat and wrote me an itinerary. And one of the ladies here in Mulakadai, I am going to visit her tomorrow. She actually fought with the auto driver so that he could drop me till Munnar in ₹20. So बस यही कहना था कि आई मीन पीपल आर वार्म हियर. दैट वाज लाइक आई थॉट मेरा चार्म, यूजुअली वन ऑफ द ओनली बेनिफिट्स और वन ऑफ माई ओनली चार्म दैट आई फील आई हैव while traveling is the way I talk to people, and the way just a solo person, bichari person going out. I don't mind taking that bichara attention, because that has really helped me in my solo travels. But I thought that charm won't work here, because I'm really good with people, local people on my travels. But that charm perfectly worked here. And today's day, as you saw, was one of the best days that I've had so far. So I'm signing off. I'll see you to the next destination. Make sure you like, share and subscribe to my video. Till then. Well, this was not the end for our मुन्नार एडवेंचर, क्योंकि अगले एपिसोड में हम फीमेल बेयर ग्रिल्स का वर्जन बन के अकेले ही एक जंगल में वाटरफॉल की हाइक. ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी टूर गाइड की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ 3500 स्पेंड किए. अगले एडवेंचर में, जो कि मुन्नार और एलिपी होगा, उसमें भी हम 3500 स्पेंड करेंगे. Oh, didn't cop.